Hello, good afternoon, boys and girls. Good afternoon, Rathod, Siddhi Rathod. Hello, good afternoon, boys and girls. Good afternoon, Rathod, Siddhi Rathod. Is everything clear? Give me clearance, Rathod. क्या स्टार्ट करें लेक्चर? अगर एवरीथिंग हो तो बता दीजिएगा प्लीज, विल स्टार्ट. ऑडिबिलिटी, विजिबिलिटी, क्लियरेंस है तो बोल दीजिएगा. शैल वी स्टार्ट? Come on, fast. Okay, all clear. Thank you so much. So very good afternoon to all of you. Welcome to Unacademy. Dr. Khalil Khan here, welcoming you to नया आगाज सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स. और हमारा आज का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिलेबस ऑफ गेट पर्सपेक्टिव ऑफ CSIT. तो फाइल सिस्टम में हम देखेंगे लाइक फाइल सिस्टम इंटरफेस, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन और फिर लास्ट में बात होगी डिस्क शेड्यूलिंग. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज द एजेंडा दैट वी आर गोना डिस्कस. सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर और फिर फाइल सिस्टम इंटरफेस. लेकिन स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वुड लाइक टू मेक इट्स इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन टू यू. यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल फाइल सिस्टम. ठीक है. चलो, among all the modules of operating system के जितने modules है, process manager, memory manager, protection manager, security manager, right? And then we have device manager, file system. ये जितने भी modules है, among all the modules of operating system, we say that file system is the visible part of operating system. फाइल सिस्टम इज द विजिबल पार्ट ऑफ OS. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि एसेंशियली यू कांट सी ए प्रोसेस रनिंग ऑन CPU, you can't see process performing IO operation, and you can't see process residing in main memory. आप नहीं देख सकते प्रोसेस कैसे रन हो रहा है CPU पर, और प्रोसेस जब IO ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है या प्रोसेस इज रिसाइडिंग इन मेमोरी, आप नहीं देख सकते. So boys and girls, कहना यह है कि neither you can see process, nor you can see memory manager, nor you can see device manager, nor you can see any IO manager, nor you can see any protection or security manager. तो इस पर्सपेक्टिव से द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ OS जो आप अपने आंखों से देख सकते हो फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है फाइल सिस्टम. यू कैन सी द कंटेंट्स ऑफ फाइल, यू कैन सी द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी, बट यू कैन सी प्रोसेस रनिंग ऑन CPU, प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आप नहीं देख सकते. तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि फाइल सिस्टम इज अ विजिबल पार्ट ऑफ OS. तो फाइल सिस्टम वेयर डज इट रिसाइड एंड व्हाट इज द आर्किटेक्चर, वो हम देखने की कोशिश करेंगे. सो फॉर दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. ये आपका CPU है, एंड लेट्स इमेजिन दैट दिस इज योर डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज, बिकॉज फाइल सिस्टम जो है वो इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सो वी से दैट दिस इज आवर डिस्क.
maybe your hard disk drive, HDD, this is your disk, and this is your CPU. तो बात यहां पर आप देखिएगा कि प्रोसेसर इज वन टाइप ऑफ डिवाइस एंड डिस्क इज अनदर टाइप ऑफ डिवाइस. प्रोसेसर इज लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डिस्क है इलेक्ट्रोमैकेनिकल. मतलब डिस्क में मैकेनिकल एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स है. तो कहने का मतलब यह है कि जो दोनों टाइप ऑफ डिवाइसेस है वो डिफरेंट है. आर्किटेक्चरल मिसमैचेस रहेंगे दोनों में. दे कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली. टू हार्मोनाइज द आर्किटेक्चरल मिसमैचेस, आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस जो है दोनों में, उसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, देन यू रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एन इंटरफेस. आपको एक डिस्क आईओ इंटरफेस चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. इंटरफेस कार्ड कहो आप या और कुछ कहो, इंटरफेस चिप, इंटरफेस कार्ड. जनरली कमर्शियल डोमेन में, कमर्शियल मार्केट में दिस इज कॉल्ड कंट्रोलर कार्ड, आईओ और डिस्क कंट्रोलर कार्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्लियर वी यूज्ड टू हैव आईडी और यू यूज्ड टू हैव SCSI and present day you are talking about SATA cards. Some sort of interface card that is going to harmonize the architectural differences between processor and disk. और ये इंटरफेस को रन करने के लिए, ये इंटरफेस को ड्राइव करने के लिए आई नीड ए डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस स्पेसिफिक इंटरफेस और डिवाइस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर. You need a device driver to manage this interface. And before the device driver, you will have what is called disk manager. This is your disk manager. And before the disk manager, you will have file system software. ये है आपका file system software. तो ये hierarchy है बच्चों. So that is why we generally discuss file system and device management together as a topic. We discuss file system and device driver as a device management as a combined topic, as an integrated topic. क्यों? क्योंकि फाइल सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर टू मैनेज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. तो फाइल सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन इश्यूज और डिजाइन एस्पेक्ट्स डिस्कस करने से पहले इट इज इंपॉर्टेंट दैट द बॉयज एंड द स्टूडेंट शुड बी वेल फेमिलियर विद द डिस्क आर्किटेक्चर और डिस्क स्ट्रक्चर. सो देयर आर टू थिंग्स जो आपने यहां पर डिस्कस करना है विद रिगार्ड टू डिस्क. देयर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू डिस्कस. नंबर वन, you will have to discuss about the disk physical structure. Disk physical structure. फिर उसके बाद disk logical structure. दोनों डिस्कस करना होगा. फिजिकल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे लाइक व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क, और लॉजिकल स्ट्रक्चर में जनरली बात होगी फॉर्मेटिंग प्रोसेस की. When you format, आपको पता है कि कोई भी डिस्क पर आप डेटा स्टोर करने से पहले you have to format with some popular file systems like NTFS, FAT32, ext4 and so on. तो हम देखेंगे कि what exactly happens when you format a disk with any file system. तो लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग है, ये फिजिकल स्ट्रक्चरिंग है. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर की, डिस्क फिजिकल स्ट्रक्चर की. फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑन डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर. तो अगर आप ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में देखोगे तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ डिस्क. ऐसे दिखेगा आपका डिस्क, हार्ड डिस्क. इसके कंपोनेंट्स से देखिएगा, इट हैज सेट ऑफ प्लैटर्स एंड एवरी प्लैटर हैज गॉट टू सरफेसेस. और हर एक सरफेस के ऊपर आपका एक रीड राइट हेड होगा. दैट रीड राइट हेड विल बी कनेक्टेड टू द डिस्क आर्म. ये देखिएगा आर्म है, ये द डिस्क आर्म. और यहां पर आपका रीड राइट हेड कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है. एंड दिस कॉल्ड द एक्चुएटर व्हिच इज गोइंग टू मूव द रीड राइट हेड टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, यहां पर आपकी फाइल स्टोर, येलो कलर में आप जो देख रहे हो, दिस इज अ फाइल एंड दिस अ डिस्क सरफेस. ये डिस्क सरफेस है. एंड दिस कॉल्ड द स्पिंडल व्हिच विल रोटेट द डिस्क
rotate the disk. And this is circuit board, electronic circuit board. Drive actual configuration port hai, data cable port hai, power port hai, all these. Right? So this is the structure. और एक real form में आप देखो ऐसे दिखेगा disk. This is how it is in reality. तो essentially अगर block diagram view में अगर आप देखोगे disk structure, यहाँ पे हम title देंगे disk structure. डिस्क स्ट्रक्चर, ठीक है. At the outset we say that disk is a collection of platters. ऐसे दिखेगा. So this organization is very important बच्चों. Lot of questions were asked based on this, और ये overlapping topic है. This also comes a part of it in CO, operating system, दोनों में डिस्कस किया जाता है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन अर्लियर पेपर्स, इंक्लूडिंग गेट 2024 में भी एक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन दिस फिजिकल ज्योमेट्री. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल ज्योमेट्री. सो दिस इज आल्सो यू कैन कॉल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क, इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल ज्योमेट्री, इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ डिस्क, फिजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्कशन. सो एट द आउटसेट हियर आई वुड पिन डाउन द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन. Disk is a collection of circular or elliptical units which are called platters. These are called platters. देखिएगा लिखा हुआ है एक राउंड जो सर्कल आपको दिख रहा है, elliptical platters. Platter can be imagined like your DVD. आपकी जो DVD है ना, that is like a platter. Like DVD के दो surfaces है, top and bottom, front and back. तो platter के भी दो surfaces है, लेकिन DVD का surface is editable, readable, writable only at one surface. लेकिन प्लैटर के दो सरफेसेस आर एडिटेबल. आप दोनों सरफेसेस, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, दोनों पर ही आप रीड एंड राइट कर सकते हो. यू कैन स्टोर द डेटा. सो दैट इज प्लैटर, कलेक्शन ऑफ प्लैटर्स, सीरीज ऑफ प्लैटर्स. दीज प्लैटर्स आर वाउंड, दे आर प्लेस्ड अराउंड एन आयरन रॉड कॉल्ड स्पिंडल. के स्टैक ऑफ प्लैटर्स करोगे आप. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी एनालॉगसली व्यूड लाइक, आपका अगर डीवीडी बॉक्स हो, डीवीडी बॉक्स में आप सेंटर में आप प्लैटर देखे, स्पिंडल देखोगे, यू स्टैक, और डीवीडी के सेंटर में एक होल रहेगा. विद रिस्पेक्ट टू दैट होल यू विल स्टैक अप ऑल द प्लैटर्स. एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट. ए कलेक्शन ऑफ प्लैटर्स, स्टैक ऑफ प्लैटर्स. एवरी प्लैटर इज हैविंग इट्स ओन रीड राइट हेड. ये रीड राइट हेड है. इट इज अ डिस्क आर्म के एसोसिएटेड रीड राइट हेड. बाय मीन्स ऑफ दिस रीड राइट हेड ओनली यू कैन बेसिकली परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन. ये एक ट्रैक है, देखिएगा, दिस इज अ ट्रैक, द ट्रैक टी, सेम ट्रैक टी, एंड ऑन द ट्रैक अभी आऊंगा मैं ऑर्गेनाइजेशन पर. सो डिस्क इज अ कलेक्शन ऑफ प्लैटर्स. Platters have got surfaces, two surfaces. So every surface is divided into elliptical or circular units by name tracks. ये tracks है. Track will be divided into sectors. ये physical geometry है. Sector is the unit of transfer. You transfer the data between disk and memory in form of sectors. Sector is measured in bytes, maybe 512 byte sector, maybe 1 KB sector, maybe 2 KB sector, maybe 4 KB sector, इस तरीके से होगा. तो sector is the unit of transfer. जो आप transfer करोगे data between memory and between disk, it is in the form of sector. Then we also have a term called cylinder. What is a cylinder? Cylinder is the same track number. Look at this. That let's call this as track X. Same track number on all platter surfaces is called cylinder. ये cylinder की तरह दिख रहा है आपको. तो इसका straight away मतलब ये हुआ कि number of cylinders is equal to number of tracks. ये conceptually आप ऐसे कह सकते हो. Number of cylinders is equal to essentially number of tracks. ये फॉर्मूला. एक सरफेस पे अगर 100 ट्रैक्स है, देन आई से आई हैव 100 सिलेंडर्स. या अल्टरनेटिवली आप कहो आई हैव 100 सिलेंडर्स, सो देयरफॉर 100 ट्रैक्स.
Then question is, again in another form you can check. This is another view. This actuator, disc arm, यहाँ पे read write head है, this is a head, and this is a track. The फेरोजाकुलर जो आपको दिख रहा है वो ट्रैक है, ये सेक्टर है, डिस्क सेक्टर है, एक ट्रैक सेक्टर है, दो टाइप ऑफ सेक्टर्स. डिस्क सेक्टर मीन द सेम सेक्टर नंबर ऑन ऑल दैट. अगर ये आपको सेक्टर नंबर x है, सेम सेक्टर ऑन ऑल प्लैटर सरफेसेस, यू कॉल डिस्क सेक्टर. Group of one or more sectors is called cluster. So cluster is nothing but group of one or more adjacent sectors is called cluster. ये total platter है, ठीक है. So this is a very important organization. Yes, hello cinemas. So this is the physical structure of disk, physical architecture of disk. तो समराइजिंगली आपको फिर से एक बार कह दूं कि disk is a collection, hard disk, magnetic disk is a collection of platters. Each platter has got two surfaces. Each surface is divided into tracks. Tracks is divided into sectors. Sector is the unit of transfer. और बाकी के terms तो मैंने आपको already बताया. All platters are wound around a spindle and basically a disk arm assembly is there, जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बाय मींस ऑफ रीड राइट हेड, बाय मींस ऑफ रीड राइट हेड. अब यहां पर अगर आप देखो फॉर परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन कैसे होगा, हाउ डू यू परफॉर्म आईओ ऑपरेशन एंड व्हाट आर द फॉर्मूलेस फॉर डिस्क आईओ टाइम. तो बॉयज एंड गर्ल्स, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, आप देखोगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस इन्वॉल्वड हियर. दो टाइप के मोशंस है यहां पर, एक है लीनियर मोशन है, दूसरा है एंगुलर मोशन. This spindle can rotate or revolve like this. Maybe you can say in this direction, clockwise direction. It can rotate. तो जिसकी वजह से you have angular velocity. And this read-write head along with disk arm can move forward and backward like this. It can go front and back like this. जिसकी वजह से I can have linear motion, linear velocity. So I have two types of velocities. One is angular, the other is linear. Angular velocity is by means of spindle and read write disk arm की तरफ से आपको linear velocity है. These two motions or these two velocities are going to govern your input output speed or input output rate of transfer. By means of this structure, how do you perform read write operation? के read write operation के क्या important components है? What are the important components of input output time? ये हमें देखना होगा. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखने की कोशिश करेंगे. What are the important components of IO time? So we'll write here disk input output time. This is invariably, इसका मतलब यह है कि what is the time needed to read or write maybe unit of transfer like a sector. एक sector read or write करने के लिए what are the components of time that we have to basically analyze, that we have to basically see. ठीक है? So let me write it. Imagine for example एक diagram read करके अंदर, or maybe by means of the previous diagram only we'll try to understand. Right now let us say read write head is positioned at some track number x. ये track x है. And I want to basically read from track number y. Maybe track number y is here. तो मुझे रीड राइट हेड को आपको या तो आगे लेना पड़ेगा, पीछे लेना. अगर यहाँ हो तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ हो तो पीछे लेना पड़ेगा. So you'll have to make a linear motion like this. You have to come from track x to track y. So that time taken by the read write head, to go from current track to the desired track is called seek time. सबसे पहला जो टाइम है डायग्रामेटिकली समझिएगा, जो आपको रीड राइट हेड के लिए लगेगा, डिस्क आर्म के लिए लगेगा, टू गो फ्रॉम यहां पर जहां पर रीड राइट हेड करंटली प्लेस्ड है, यहां से लेकर यहां तक जहां पर आपको डिजायर्ड ट्रैक पर आना है, ये ट्रैक से ये ट्रैक पे आपको आना है, तो रीड राइट हेड ऐसा मूव करेगा. तो ये जो टाइम लगेगा मूव करने के लिए रीड राइट हेड के, दैट इज कॉल्ड सीक टाइम. सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इनपुट आउटपुट टाइम इज कॉल्ड सीक टाइम. शॉर्ट में हम लिखेंगे ST, और दिस इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ x एंड y into track time. लिखूंगा मैं यहां पर. What is the meaning of all this? We'll write down. X is currently placed track.
करंटली प्लेस्ड ट्रैक। ये एक्चुअल फॉर्मूला है। Y इज द डिजायर्ड ट्रैक जहां से आप रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिजायर्ड ट्रैक। एंड व्हाट इज TTT? ट्रैक टाइम। ट्रैक टाइम का मतलब है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए रीड राइट हेड के लिए कितना टाइम लगेगा। दिस विल बी गिवन लाइक एज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्क, एज पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको दिया जाएगा, एज पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको दिया जाएगा हाउ मच टाइम डज इट नीड टू गो फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक, ट्रैक टाइम। So current position of read write head and desired position of read write head, like मान लीजिए for example you are placed at track 50 और आप read करना चाह रहे हो from track number 200, then going from 200 to 50 or going from 50 to 100 is 156. So 150 multiplied by time taken for going from one seek to one track to another track time, that will give you seek time. Generally in the problems in actual this will be taken as like एवरेज सीक, दिस विल बी टेकन लाइक एवरेज सीक। तो आप एवरेज सीक से कर सकते हो। तो जनरली देखा गया है कि एग्जाम में आपको सीक टाइम की वैल्यू दी जाएगी एज सम कांस्टेंट वैल्यू, तो चलिए आफ्टर सीक टाइम व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? आफ्टर सीक टाइम यू विल हैव समथिंग कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी टाइम। रोटेशनल लेटेंसी टाइम, जनरली वी राइट इन शॉर्ट लेटेंसी टाइम, जिसका शॉर्ट फॉर्म LT है। अंडरस्टैंड करने का पॉइंट ये है, इमेजिन फॉर एग्जांपल दिस इज माय ट्रैक वेयर आई हैव करंटली प्लेस्ड, ये मेरा ट्रैक है जहां पर मैंने विद सीक टाइम रीड राइट हेड को यहां पर लगवाया है, दिस द ट्रैक, ठीक है, द ट्रैक वाई जहां पे आपसे रीड करना है। इमेजिन फॉर एग्जाम्पल इमेजिन के रीड राइट हेड आपका जो है वो यहां पर प्लेस्ड है, ये सेक्टर पर प्लेस है, और जो सेक्टर आप रीड करना चाह रहे हो, ये सेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल दिस सेक्टर एस, लेट्स इमेजिन दिस सेक्टर एस, ये सेक्टर आप रीड करना चाह रहे हो। तो बॉयज एंड गर्ल्स मुझे आपको बताना ये है कि यू कैन नॉट टेक रीड राइट हेड ऐसे आप नहीं लेके जा सकते हो। रीड राइट हेड की एक लिमिटेशन है, डिस्क आर्म की लिमिटेशन है कि यू कैन आइदर मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, इस तरीके से। तो क्वेश्चन इज हाउ टू ब्रिंग द स्टार्ट ऑफ द सेक्टर, ये आपका स्टार्ट ऑफ सेक्टर है, कि ये स्टार्ट ऑफ सेक्टर रीड राइट के अंडर में कैसे लाओगे। दैट इज जनरली डन बाय रोटेशन, आपको रोटेट करना होगा। यू रोटेट द प्लैटर सरफेस सो दैट द स्टार्ट ऑफ द सेक्टर कम अंडर रीड राइट हेड। तो इसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। देखिए रोटेशनल लेटेंसी है, लेटेंसी मतलब डिले, तो जो रोटेशन करने में आपको डिले लग रहा है टू ब्रिंग द स्टार्ट ऑफ सेक्टर अंडर रीड राइट हेड, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी टाइम। जैसे आप देख रहे हो, समटाइम ये हाफ रोटेशन रहेगा, समटाइम ये 3/4 रहेगा, समटाइम 1/4 रहेगा, समटाइम ऑलमोस्ट फुल रोटेशन रहेगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स में जब हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स, तो ये यूनिवर्सल रूल है, रिमेंबर कीजिएगा, रोटेशनल लेटेंसी टाइम इज कैलकुलेटेड और टेकन एज एवरेज रोटेशन टाइम R/2, time for making half rotation on an average rotation time. So what is R? R is called rotation time. Time needed to rotate the platter surface. Rotation time. एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, वो है रोटेशन टाइम R. एक रोटेशन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, that is called rotation time. Boys and girls, how to calculate rotation time? Rotation time is computed by a metric called RPM. डिस्क की एक मेट्रिक है जिसका नाम है आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, कितने रोटेशंस डिस्क मेक कर रहा है ड्यूरिंग 1 मिनट। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से डिस्क इज मेकिंग 3600 आरपीएम, तो आप इक्वेशन बना सकते हो, 3600 रोटेशंस आर मेड इन 60 सेकेंड्स। तो एक रोटेशन बनाने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड आर। तो ये वैल्यू आपको बनेगी 60/3600, इसकी वैल्यू आएगी रफली 16.66 मिली सेकेंड्स। यह रोटेशन टाइम, ये अप्रोच है फॉर कंप्यूटिंग रोटेशन टाइम। तो बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव कंप्यूटेड सीक टाइम। मैंने आपको बताया सीक टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली, लेकिन जनरली बुक में एक एवरेज वैल्यू दी जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू दी जाती है, वी हैव टू फॉलो दैट। रोटेट सीक टाइम के बाद रोटेशनल लेटेंसी से यू ब्रिंग द रीड राइट हेड अंडर, यू ब्रिंग द रीड राइट हेड टू द स्टार्ट ऑफ सेक्टर, या स्टार्ट ऑफ सेक्टर कम अंडर रीड राइट हेड। इसके बाद क्या है, वी हैव टू ओनली रीड। Yes, ईशन कुमार, गुड आफ्टरनून। वी हैव टू रीड द सेक्टर। तो रीडिंग सेक्टर के लिए जो टाइम लगेगा उसका नाम है, यहां पे लिखेंगे हम ट्रांसफर टाइम।
transfer time, and some people call transmission time. We denote this is just as TT, transfer time. Time needed to transfer the sector, time required to read the sector or write to the sector, that is called transfer time. तो मान लीजिए मेरा हाथ जो है दिस इज अ सेक्टर और ये रीड राइट हेड है, तो मुझे कैप्चर करना है डेटा, तो आई कैप्चर इट बाय रोटेटिंग, कीपिंग द रीड राइट हेड स्टैटिक स्टेशन, and I rotate the platter surface so that the content of that sector or cluster will go into the disk controller buffer, और वो controller buffer में से बाद में through DMA operation it will go into the primary memory through the data bus. That is the way. So time to transfer the data from the surface into controller buffer is called transfer time. Transfer time. So transfer time calculate कैसे करेंगे? So boys and girls, repeatedly I'm saying these three components are important. Number one is seek time, number two is rotational time, number three transfer time. Transfer time calculate करने के लिए हमें थोड़ा सा framework develop करना पड़ेगा, यहां पर कर लेते हैं. So mechanism or approach for computing transfer time. Please see here, boys and girls. Transfer time. Suppose for example, if I say track size is, let us say, Z bytes. Every track will have some size. Let us say the sector size, जो सेक्टर आप रीड करना चाह रहे हो, is say X bytes. Naturally, the size of sector will be less than the size of track. Size of sector will be less than size of track. What happened, Vaibhav Pandey? Transfer time, transmission time, both are same. ट्रांसफर टाइम कहो या ट्रांसमिशन टाइम कहो, दोनों सेम है. अभी यहां पे बता रहा हूं ट्रांसफर टाइम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वैभव. तो सेक्टर साइज इज एक्स बाइट्स. लेट अस से अभी हमने कंप्यूट किया रोटेशन टाइम. रोटेशन टाइम इज आर मिली सेकेंड. जनरली दिस इज इन मिली सेकेंड्स. यस एग्जैक्टली करेक्ट राहुल, बिल्कुल सही बात. पहले क्या होगा, सीक होगा. रीड राइट हेड जो ट्रैक पर है वो ट्रैक से आप डिजायर्ड ट्रैक पर आना है, वो सीक होगा, सीक टाइम. जैसे ही आप डिजायर्ड ट्रैक पर आ गए, वो रीड राइट हेड विल बी पोजीशन एट सम ट्रैक एट सम सेक्टर. ठीक है, दिस वी हैव कम टू ट्रैक वाई फ्रॉम ट्रैक एक्स विद सीक. अब यहां पर आ जाने के बाद आपने ये सेक्टर पर है और आपने एक्चुअली रीड करना है ये सेक्टर एस. तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेक्टर कम अंडर रीड राइट हेड. कैसे करेंगे, रोटेट करेंगे ताकि ये स्टार्टिंग ऑफ सेक्टर कम अंडर रीड राइट हेड. दैट इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी. फिर उसके बाद है ट्रांसफर टाइम. ट्रांसफर टाइम का इक्वेशन फ्रेमवर्क ये है क्या, ये है, देखिएगा प्लीज, आई एम हाईलाइटिंग इट. दिस इज फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसफर टाइम. अब यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कैसे हम ट्रांसफर टाइम कैलकुलेट करते हैं. कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सुनिएगा प्लीज. यहां पर लॉजिक ये है, इफ रीड राइट हेड, बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज फॉलो केयरफुली, इफ रीड राइट हेड इज पोजीशन एट सम प्लेस इन द ट्रैक. ये ट्रैक है, ये ट्रैक के कोई पोजीशन पर रीड राइट हेड को हमने यहां प्लेस किया. एंड पॉइंट इज, अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन बनाऊं, इफ आई मेक वन फुल रोटेशन, अगर मैं एक रोटेशन मेक करूं, इफ आई मेक वन फुल रोटेशन, अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन बनाएंगे तो क्या होगा, रीड राइट हेड को तो कांस्टेंट रखे और वी आर रोटेटिंग द होल प्लैटर सरफेस एंड होल ट्रैक इज गेटिंग रोटेटेड. तो क्या होगा उससे ये होगा कि रीड राइट हेड विल बी एबल टू कैप्चर द होल ट्रैक. रीड राइट हेड पूरी ट्रैक रीड करेगा, कर पाएगा. मतलब अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन बनाएंगे, वो रोटेशन टाइम में वी विल बी एबल टू रीड द कंप्लीट ट्रैक. एक रोटेशन टाइम में पूरी सारी ट्रैक हम रीड कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा यहां पर. तो इन रोटेशन टाइम आर मिली सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल, वी आर एबल टू रीड द कंप्लीट ट्रैक ऑफ जेड बाइट्स ऑफ डेटा. ये ट्रैक साइज है, ये कंप्लीट ट्रैक वी आर एबल टू रीड इन वन रोटेशन टाइम. एक रोटेशन में सारी ट्रैक रीड कर रहे हो आप. क्या हमारा मकसद सारी ट्रैक रीड करने का है? नो सर. फिर क्या है, आई वॉन्ट टू रीड वन सेक्टर. आई वॉन्ट टू रीड वन सेक्टर. तो एक सेक्टर ऑफ साइज एक्स बाइट्स जो मुझे रीड करना है, तो उसको रीड करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, तो बना दीजिएगा इक्वेशन. आउट ऑफ जेड बाइट्स, अगर मुझे सिर्फ एक्स बाइट्स रीड करना है, इफ आई वांट टू रीड ओनली एक्स बाइट्स, हाउ मच टाइम इज नीडेड.
So therefore this become the equation formula for transfer time. For transfer time. So therefore transfer time is x into r divided by z milliseconds. ये है फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग ट्रांसफर टाइम. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. ट्रैक साइज इज z बाइट्स, सेक्टर साइज इज x बाइट्स, द वैल्यू ऑफ सेक्टर साइज इज लेस देन ट्रैक साइज, रोटेशन टाइम है r मिलीसेकंड्स. रोटेशन टाइम हमने कैसे कंप्यूट किया, यहां पे मैंने आपको बताया था. रोटेशन टाइम कंप्यूट किया जाएगा यूजिंग आरपीएम ऑफ द डिस्क. ये आरपीएम दी जाएगी आपको या डायरेक्ट रोटेशन टाइम दिया जाएगा. तो यूजिंग आरपीएम यू आर कंप्यूटिंग रोटेशन टाइम. यहां पे कंप्यूट किया हम. व्हाट इज द लॉजिक? 3600 रोटेशंस आर मेड इन 1 मिनट. 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा? सो देयरफॉर टाइम ऑफ रोटेशन इज 60 by 3600. So we have calculated rotation time. The point is, in one rotation time, this is the logic, in one rotation time we are reading the whole track z bytes. तो वो ट्रैक से we want to read only x bytes. So कितना टाइम लगेगा? x by z into r. That's it. ये है टाइम फॉर मेकिंग रीडिंग वन सेक्टर. एक सेक्टर रीड करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए. वो है सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम, ट्रांसफर टाइम. These are the parameters. These are the parameters. एक और मेट्रिक है डेटा ट्रांसफर रेट, जिसका मतलब है at what rate you are able to transfer the data. That is called speed of disk, measured in bytes per second. Data transfer rate is measured in bytes per second. But before going forward to logical structure of disk, देखेंगे कुछ एक सिंपल प्रॉब्लम अगर हो तो यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. Exactly based on the concept that we discussed just now. This is the problem. 2 मिनट का टाइम दूंगा सभी बच्चों को, ट्राई कीजिएगा. इट इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस जस्ट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स. जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया उसी के बेसिस पर ये प्रॉब्लम है. तो वर्कआउट द प्रॉब्लम एंड फील द कॉन्फिडेंस. कम ऑन, वर्कआउट द प्रॉब्लम एंड फील द कॉन्फिडेंस बॉयज एंड गर्ल्स. Number of laterals are given 16. Number of tracks per surface 512. Number of sectors per track 2048. Sector offset 12 bits. Average seek time 30 millisecond. Disk RPM 3600. You are first required to compute unformatted capacity of disk. Disk capacity क्या है? Anybody? चलिए स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले सरफेस कैपेसिटी डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे. मैं 2 अप्रोचेस से सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम. दोनों मेथड आपको बता रहा हूं तो अच्छे तरीके से समझिएगा. चलिए, ये आपका डिस्क सरफेस है. सरफेस. सबसे पहले मैं सरफेस कैपेसिटी डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद डिस्क कैपेसिटी डिटरमिन करेंगे. 2/24 विजय इज सेइंग 2/24. सेक्टर ऑफसेट मींस अगर सेक्टर की एक बाइट रीड करने के लिए 12 बिट्स लग रहे हैं. पेज जैसा पेज ऑफसेट है सेक्टर ऑफसेट. टू रीड 1 बाइट ऑफ सेक्टर मुझे 12 बिट्स लगेंगे. 12 बिट्स तो मतलब सेक्टर साइज क्या हुआ? 2/12. सेक्टर साइज मतलब 2/12. तो सेक्टर ऑफसेट से आप यू कैन डिटरमिन सेक्टर साइज, ये मतलब है. तो देखिएगा, दिस इज माय सरफेस. सरफेस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस 512. देयर आर 512 सेक्टर ट्रैक्स. देयर आर 512 ट्रैक्स. नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक कितने? 2048. 2K 2048. तो मतलब ये सारे आपके सेक्टर्स बने.
सुनिएगा, there are 512 sectors, sorry 512 tracks. Each track has got 2k sectors, 2048. So number of sectors per surface, number of sectors per surface is 512 into 2048. सारे सरफेस पर कितने सेक्टर्स है? 512 into 2048. Now what is sector size? जैसे मैंने कहा सेक्टर ऑफसेट इज 12 बिट्स, मतलब सेक्टर साइज बना आपका, सेक्टर साइज बना 2 पर 12 4 KB. तो सेक्टर साइज इज 4 KB. तो इसको आप 4 KB से अगर मल्टीप्लाई करो, दिस विल गिव यू सरफेस कैपेसिटी. एक सरफेस की कैपेसिटी इतनी है 512 इंटू 2048, नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर साइज. दिस इज सरफेस कैपेसिटी इन बाइट्स. डिस्क के एक सरफेस की कैपेसिटी इतनी है. डिस्क पर कितने सरफेसेस है? सुनिएगा, नंबर ऑफ प्लैटर 16, मतलब नंबर ऑफ सरफेसेस बिकम 32. 16 इंटू 2, हर प्लैटर के 2 सरफेसेस होंगे, तो मतलब देयर आर 32 सरफेसेस. सो ऑब्वियसली आपकी डिस्क कैपेसिटी बनेगी, नंबर ऑफ सरफेसेस 32 इंटू सरफेस कैपेसिटी 512 इंटू 2 KB इंटू 4 KB. ये है आपकी डिस्क कैपेसिटी इन बाइट्स. अनफॉर्मेटेड मतलब रॉ कैपेसिटी. डिस्क की रॉ कैपेसिटी है दिस मच. तो दिस वैल्यू इज हाउ मच? 2 पावर 5, 2 पावर 9, 2 पावर 11, 2 पावर 12. तो ये बना आपका 20, 32, 37, 2 पावर 37. तो मतलब दिस इज 128 GB. द कैपेसिटी ऑफ डिस्क इज 128 GB. विजय, चेक कि आपने कहां पर मिस्टेक की. कैपेसिटी ऑफ डिस्क इज 2 पावर 37, 128 GB. Okay, so the answer for the first question is 128 GB. अब नेक्स्ट थिंग इज इनपुट आउटपुट टाइम पर सेक्टर. यहीं पे वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे. इनपुट आउटपुट टाइम, चेक हियर. हमने कहा आइदर अर्लियर आई नीड सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम. ये तीनों कंपोनेंट्स हमें ऐड करना है. सीक टाइम दिया गया है प्रॉब्लम में. सीक टाइम, हाँ, एवरेज सीक टाइम 30 मिली सेकेंड, तो ऐड करिएगा 30 मिली सेकेंड प्लस लेटेंसी टाइम. लेटेंसी टाइम हमने क्या कहा था? इफ इट इज नॉट गिवन हाउ मच टू रोटेट, लेटेंसी टाइम हमने कहा था फॉर्मूला R/2. व्हाट इज R? R इज रोटेशन टाइम. अगर RPM 3600 है, मैंने आपको पहले कहा था R की वैल्यू आएगी 16.66 मिली सेकेंड्स. 60 by 3600 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट करो, यू विल गेट वैल्यू 16.66. फॉर एग्जांपल R इक्वल टू 16.66. तो R/2 मतलब उसका हाफ होगा. इसका हाफ क्या होगा? 8.33 मिली सेकेंड्स प्लस ट्रांसफर टाइम. ट्रांसफर टाइम के लिए हमें इक्वेशन यूज करना होगा, बट आई वुड रिकमेंड ये इक्वेशन जो हमने पहले देखा था, बट आई वुड से डोंट यूज द इक्वेशन, यू यूज कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्चुअली आप अप्लाई कीजिएगा और फाइंड आउट कीजिएगा वैल्यू. तो ट्रांसफर टाइम के लिए यू शुड नो 2 थिंग. यू शुड नो सेक्टर साइज, यू शुड नो ट्रैक साइज, यू शुड नो रोटेशन टाइम. अब सेक्टर साइज तो पता है हमें 4 KB. ट्रैक साइज हमें डिटरमिन करना होगा. ट्रैक साइज कैसे डिटरमिन करेंगे? नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक आर 2048. यहां पे हम बनाएंगे नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इज इक्वल टू 2048. देखिएगा, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक and sector size is 4 KB. Sector size is 4 KB. So therefore track size is equal to number of sectors 2048 multiplied by 4 KB. So this become 2 KB, 2K into 4 KB. ये बनेगा 8 MB. This is your track size 8 MB. अब इक्वेशन बनाइएगा. राइट, इक्वेशन बनाइएगा. क्या इक्वेशन है? द कंप्लीट ट्रैक 8 MB कैन बी रीडेबल इन रोटेशन टाइम 16.66 मिली सेकेंड्स.
लेकिन ये ट्रैक से मुझे सिर्फ सेक्टर रीड करना है साइज 4 KB, तो रीड 4 KB हाउ मच टाइम इज नीडेड? तो ये आपका इक्वेशन बना ट्रांसफर टाइम 4 KB इंटू 16.66 डिवाइडेड बाई 8 MB milliseconds. So this bytes and bytes cancel, this will go K time, this will go 2 time, right? And again this will go 8.33 divided by 1024, a very small value millisecond. Let us call this as some x, the value, very small value. So now if you substitute here this value x, transfer time, this is your input output time. ये है आपका इनपुट आउटपुट टाइम. Pandey Adarsh is asking that, saying that he is having a trouble, having some tough time challenge with regard to synchronization problem. देखिएगा बच्चों, synchronization के लिए सबसे पहले your concepts, your synchronization tools काफी अच्छे स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और फिर you should be very clear with what do you say the synchronization requirements. क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के जो रिक्वायरमेंट्स है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग, उसका डेफिनेशंस एक्सट्रीमली क्लियर होना चाहिए. देन सम प्रॉब्लम्स विच आर देयर ऑन यूट्यूब ऑफ माय डिस्कशन, यू कैन हैव अ लुक एट इट. एंड देन कुछ यूट्यूब पर आप देख सकते हो, PYQs भी है, तो वो देखिएगा हाउ वी आर सॉल्विंग इट, एंड देन यू प्रैक्टिस. एंड फाइनली आपका जो भी डाउट अगर हो, फिर भी अगर आप में स्ट्रगल कर रहे हो कोई प्रॉब्लम में, देन आई एम देयर ऑलवेज वेलकमिंग यू योर डाउट्स. तो आप मुझे DM कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर एंड सी क्लैरिफिकेशन. एंड इफ आई सी दैट you need to speak to me, I will give you permission, you can talk to me by making telegram channel on telegram call. ठीक है? So don't get nervous, don't get worried, you can basically always be in touch and see clarifications. ठीक है? तो चलिए प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे. So we have completed unformatted capacity of disk, input output time per sector. डेटा ट्रांसफर रेट अभी बताऊंगा. सेक्टर एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर वी विल ट्राई टू वर्क आउट सेक्टर एड्रेस हियर. चेक. एक सेक्टर रीड करने के लिए कितने बिट्स लगेंगे, दैट इज कॉल्ड सेक्टर एड्रेस. तो बेटा सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे प्लैटर. प्लैटर में दो सरफेसेस है, एक सरफेस सेलेक्ट करने के लिए कुछ बिट्स लगेंगे, एक सरफेस में ट्रैक्स है, ट्रैक सेलेक्ट करने के लिए कुछ बिट्स लगेंगे, और ट्रैक में सेक्टर है, सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए कुछ बिट्स लगेंगे. दिस इज योर व्हाट डू यू से सेक्टर एड्रेस. दिस इज योर सेक्टर एड्रेस. जितने बिट्स यहां पे आपको लगेंगे दैट इज सेक्टर एड्रेस. ये कैसे कैलकुलेट होगा सुनिएगा प्लीज. How many platters do I have? So this is selecting a platter, this selecting a surface, this selecting a track, and this selecting a sector. तो उसके लिए हमें दिया गया है another 2-3 lectures, Rahul, to complete. Number of platters are 16. Number of platters are 16, so I need 4 bits. Each platter has got 2 surfaces, 1 bit to select a surface. अब ट्रैक पे आ जाइए. नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस आर 512, तो एक ट्रैक सेलेक्ट करने के लिए 9 बिट्स. नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक 2048, 2K, मतलब 11 बिट्स. दीज आर सेक्टर एड्रेस. सो नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन सेक्टर, दैट इज सेक्टर एड्रेस, इज इक्वल टू 25 बिट्स. ये है आंसर फॉर द नेक्स्ट बिट, लास्ट बिट. सेक्टर एड्रेस इज 25 बिट्स. अब ये बेसिस पर आप डिस्क की कैपेसिटी भी डिटरमिन कर सकते हो. द लास्ट पैरामीटर विल बी व्हाट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफसेट D. सेक्टर ऑफसेट, हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू रीड 1 बाइट फ्रॉम द सेक्टर. सेक्टर ऑफसेट इज 12 बिट्स. तो अगर आप यहां पे 12 बिट्स सब्स्टिट्यूट करो, दिस विल गिव यू द डिस्क कैपेसिटी.
because this will give you total number of bytes. Total number of bytes is disk capacity. So disk capacity from this equation will become how much? एक byte of the disk, 1 byte of disk is can be selected with 25 plus 12, 37 bits. 37 bits of address, ये total यहाँ पर इसका 37 bits of address is needed to select 1 byte. Again I repeat, 37 bits of address is needed to select 1 byte. तो total number of bytes कितने होंगे? 2 power 37. 2 power 37. 2 power 37 means 128 GB. Same thing. So earlier I computed the unformatted capacity of disk by another approach, surface capacity से, और यहाँ पर मैं आपको sector addressing से भी आपको बताया हूँ कि unformatted capacity कैसे determine की जाती है. Last parameter है data transfer rate, which it is generally measured in bytes per second, that indicate the speed of disk. Bytes per second. एक सेकंड में कितने bytes read और write कर पा रहा है read write head. That is called data transfer rate, generally written in short as DTR. तो कैसे करेंगे आप DTR, data transfer rate? यहां पे हम देखेंगे how to compute data transfer rate generally measured in bytes per second. इसका लॉजिक ये है, one complete rotation, in one complete rotation we can read one full track. So in our example, हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें रोटेशन टाइम है 16.66 मिली सेकेंड्स, ट्रैक साइज है 8 MB, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, ट्रैक साइज है 8 MB. So my point is 8 megabytes of data is readable in 16.66 millisecond, मतलब 10 power minus 3 second. So therefore in 1 second how many bytes are readable? So this will become 8 by 16.66 into 10 power 3 megabytes per second. ये है आपका इक्वेशन फॉर डेटा ट्रांसफर रेट. ये कॉन्सेप्ट है, ये वैल्यू है. तो आप कह सकते हो 10 power 3 is into m is giga. 8 by 16 अगर आप roughly half लो, roughly if you take half, then I can say that this is roughly 0.5 gigabits per second, roughly. So this is the ideology, this is the philosophy of the physical geometry of disk. ठीक है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर दैट डील्स विद फॉर्मेटिंग प्रोसेस. सो एसेंशियली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि व्हेन यू फॉर्मेट अ डिस्क विद सम फाइल सिस्टम लाइक NTFS, FAT32, ext4, UFS, यूनिक्स फाइल सिस्टम, या सोलारिस फाइल सिस्टम, ZFS. सो जब हम फॉर्मेट करेंगे कोई डिस्क विद एनी फाइल सिस्टम, कि what are the important data structures that are embossed, that are created on the disk, ये हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर. डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. सो डिस्क लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब है इनवेरिएबली इट मींस इनवेरिएबली इसका मतलब है फॉर्मेटिंग प्रोसेस. ठीक है.
formatting process. So let's see this in a diagrammatic form, in a block diagram form. So imagine, for example, this is your disk. ये आपकी disk है. So we'll put some ठीक है. These are disk. Generally, the disk is divided into logical units. Disk is divided into logical units which are called partitions. Something like this. Disk is divided into logical units called partitions. We have some system utilities. System utilities like fdisk or df, disk fragment or format disk, fd. ये जो commands है, through these system commands you can create partitions. Partitions are logical unit, they are not physical, they are logical. That means partition can be edited, deleted, created, etc. Generally for distinction purpose, partitions are designated with drive letters, जैसे कि C colon है, D colon है, E colon, C colon, D colon, E colon. So partitions are designated with the drive letters. And let me also tell you that partitions are of two types. Partitions are of two types. What are the two types of partitions? Let us write here. One is called primary and the other are extended. Extended and sometimes we also call logical drives. Primary partition की philosophy यह है कि this is bootable and extended they are non-bootable. Non-bootable. Bootable की philosophy यह है कि I can store operating system plus other application software and user data. Anything can be stored on primary partition. Whereas extended partition may you can store only data and other software, application software. You cannot store the operating system on an extended drives. और अगर आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही डिस्क हो, then if I have one or more partition, then remember that at least there should be one primary partition, क्योंकि operating system load करना होगा. So having multiple primary, क्या आप पूरे partition multiple हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं. All of them can be primary partitions. एक advantage ये है of having all primary partitions is that the advantage of having all primary partition is that you can have different operating system, OS1, OS2, OS3. So that at boot time, जब आप boot करोगे system को, then from that selected partition, the corresponding operating system can get into memory. So such a hard disk connected in a computer having multiple primary partitions, right? Multiple primary partitions, that is called multi-boot computer. Multi-boot computer disk, multi-boot computer. हाँ, सिस्टम कॉल नहीं होगा इसके लिए. I mean, this is booting process. जहां पे एक फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन के एक फिक्स लोकेशन पर मास्टर बूट रिकॉर्ड रहेगा. सो एक्चुअली व्हेन यू मेक अ स्विच ऑन ऑफ द सिस्टम, राइट, फर्स्ट प्रोग्राम टू रन इज पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर उसके बाद बायोस के बाद यू लोकेट द एमबीआर एंड गेट एमबीआर इनटू मेन मेमोरी एंड देन ट्रांसफर द कंट्रोल टू द बूट लोडर. बूट लोडर देखेगा कि मल्टीपल प्राइमरी पार्टीशंस में मल्टीपल ओएस है, सो इट विल डिस्प्ले एन ऑप्शन टू द यूजर के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करना चाह रहे हो. देन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम गेट इनटू मेमोरी. दैट इज कॉल्ड बूटिंग. That is called booting. Now point is, अगर जो भी प्राइमरी पार्टीशन है, जो भी पार्टीशन है आपका प्राइमरी एक्सटेंडेड, we generally say that partition should be formatted with some file system. अगर आप फॉर्मेट नहीं करोगे तो फिर वो पार्टीशन कहलाएगा रॉ पार्टीशन, RAW, रॉ. रॉ पार्टीशन में you cannot have better storage and better retrieval. The objective of formatting is just like placing infrastructure on disk for better storage and effective efficient retrieval. एक अच्छे स्टोरेज के लिए, अच्छे तरीके से स्टोर करने के लिए डेटा और अच्छे तरीके से एफिशिएंटली रिट्रीव करने के लिए वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. तो मेरी अपनी टर्मिनोलॉजी में मैं जनरली आई यूज्ड टू से दैट
formatting, the purpose, the goal of formatting a disk partition is to put infrastructure onto disk. Infrastructure. जैसे कि like in your classroom you have infrastructure, in your library you have infrastructure. अगर लाइब्रेरी में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होगा, लाइक बुक रैक्स है, बुक शेल्फ्स है, टेबल्स है, अलमीराज है, एक्सेट्रा, अगर आप ऑर्गेनाइज ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बुक्स को नहीं करोगे, if you put all books in a sort of thousands of books in piles, in the case of a pile, एक ढेर लगा दीजिएगा, ठीक है, ढेर लगा दीजिएगा, then it becomes difficult for you to locate a book, to find a book, to search a book. So that's why you have infrastructure. आप separate racks रखोगे, in different racks you organize different types of books, and then you put a legend here, directory like, and then through the legend or directory you can go to the corresponding track or corresponding book आप pull up कर लोगे. Pandey, the basic reason for having multiple operating system is usage experience. Having multiple operating system doesn't mean that you can load everything into main memory. नहीं, at a time आप सिर्फ एक ही operating system को load करोगे. हाँ, within that base operating system या home operating system you can use virtualization principle to run another operating system as a application. That is a different matter. Virtualization है, जैसा कि आप Windows से boot किए, एक आपके पास virtualization software होगा Unix का, आप उससे Unix या Linux का आप you can run Unix or Linux as an application in Windows. That is a different matter. वो virtualization कहते हैं. यहां पर मैं बात कर रहा हूं मल्टी बूट कंप्यूटर की. मल्टी बूट कंप्यूटर में यू विल हैव द ऑप्शन ऑफ लोडिंग वन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज जनरली स्पेसिफाइड और सेलेक्टेड एट बूट टाइम. बूट टाइम पर आप सेलेक्ट कर सकोगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर गोना ब्रिंग इनटू मेन मेमोरी. तो बच्चों बात हो रही थी कि एनी पार्टीशन रॉ, आई मीन bootable or non-bootable, it must be formatted with some file system to bring, for better storage and retrieval. So here I'm going to show you essentially and effectively when you format a disk partition or a disk with any file system like NTFS, FAT32 or ext4 or Unix file system, typically what data structures are going to get embossed, कौन से data structures create होंगे partition पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं. That is called partition structure. So let's see quickly in the remaining leftover time of the class. Let's see quickly partition structure. So this is my partition, imagine, and ये partition में यहां पर for example I have part 1, part 2, part 3. That's it. So this is called BCB. अभी बताऊंगा what is BCB. Next is called PCB. I will tell you what is it. And third is called directory structure. And then I have data blocks. I have data blocks. So here I will have data blocks. These how the partition will look like. ठीक है? So essentially I would say that it is divided into two parts. It is divided into two parts like this. This is generally, मेरी अपनी terminology में कहूंगा, this is like admin part, administrative part of the disk, and this is like your user space. जैसा आपकी मेन मेमोरी डिवाइड होगी सिस्टम एरिया एंड यूजर एरिया, एस एरिया एंड यू एरिया, उसी तरह यहां पर दो पार्ट्स है, सिस्टम एरिया ऑफ डिस्क एंड दिस इज यूजर स्पेस. So boys and girls, here I would like to make a mention. I would like to make a mention that this is what is termed as, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई गेट क्वेश्चंस आ चुके हैं बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर. दिस कॉल्ड पार्टीशन स्ट्रक्चर. Is called partition structure. ठीक है? And this partition structure happens due to formatting process. चलिए अब समझने की बात यह है कि what is BCB? BCB is called boot control block. Boot control block.
बूट कंट्रोल ब्लॉक। बूट कंट्रोल ब्लॉक मतलब इफ द पार्टीशन इज बूटेबल, अगर वो पार्टीशन बूटेबल हो तो वहां पर आप फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम जैसे कि यूनिक्स और लिनक्स हो तो इनिट होगा, या अगर विंडोज हो तो समथिंग लाइक kernel.exe और some program name, the first operating system program which is necessary for booting, that will be kept in BCB, boot control block. Next is called partition control block. Partition control block. What will this contain? The partition control block will contain all the details of the partition. How many blocks are there, how many blocks are good, how many blocks are bad, what is the block size, सारे पार्टीशन, सारे ब्लॉक के डिटेल्स, सारे पार्टीशन के डिटेल्स यहां पर रहेंगे. दैट इज वाई इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन कंट्रोल ब्लॉक इज नोन बाय डिफरेंट टर्म्स. लाइक फॉर एग्जांपल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिस इज कॉल्ड सुपर ब्लॉक, and for example in Windows based system this is called master file table, and in earlier file system this is called file allocation table, FAT, and the third is the directory structure. जो डायरेक्टरी यूज कर रहे हो आप सिस्टम में उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर यहां रहेगा. एंड द लास्ट पार्ट इज द डेटा ब्लॉक्स. डेटा ब्लॉक्स जहां पर आप डेटा स्टोर करोगे फाइल का. दैट मीन्स वेदर यू वांट टू स्टोर योर फाइल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, सभी का डेटा ये ब्लॉक्स में रहेगा. डिस्क ब्लॉक, दीज आर कॉल्ड यूजर डिस्क ब्लॉक्स. यू कैन कंसिडर लाइक वन सेक्टर. These are like one sector, one block, one sector, something like that. So boys and girls, when we format a disk partition with any file system like FAT32 NTFS or ext4 or Unix file system, essentially ये structuring create होगी. ये काफी important है. तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में I will make a discussion on two things. One is called file system interface and the other is called file system implementation aspects. इम्प्लीमेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा फाइल एलोकेशन मेथड्स, फ्री स्पेस मैनेजमेंट एंड सो ऑन. फिर उसके बाद और एक सेशन होगा जहां पर हम बात करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग टेक्निक्स. ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड एंजॉय लर्निंग एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.